Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland and very warm welcome to all the new members of my YouTube family. I hope all of you are fine and doing well. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Umi Muhammad and today we are going to solve test number 2 from New Oxford Modern English book 5 and it is the third edition of this book. If you need essay in English language about any topic, please visit my blog. Link is in the description. और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअउ व मिन नफ़्सिन ला तशबअु व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। The first section of exercise is section A, unseen comprehension. Question number 1 है हमारे पास study the advertisement below. नीचे हमें एक advertisement दिया गया है. Welcome to Junior Readers Club. Come and join our reading circle. We welcome new members. We meet once a month to discuss a book. Read it, think it, discuss it. ये एक एडवर्टाइजमेंट है जिसमें एक क्लब को ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन दिया जा रहा है या उसके बारे में बताया जा रहा है कि कम एंड ज्वाइन आए और ज्वाइन करें हमारे रीडिंग सर्कल को। वी वेलकम न्यू मेंबर्स, नए मेंबर्स को हम खुशामदीद कहते हैं। वी मीट वंस अ मंथ, हम महीने में एक दफ़ा इकट्ठे होते हैं टू डिस्कस अ बुक, एक किताब को डिस्कस करने के लिए। रीड इट, इसको पढ़ें, थिंक इट, इसके बारे में सोचें, डिस्कस इट और इसको डिस्कस करें। सम बुक्स वी आर रेड एंड डिस्कस्ड सो फार, यहाँ पे जो जिन बुक्स को डिस्कस कर चुके हैं और रीड कर चुके हैं उनके नेम्स गिवन हैं। द मैट्रिक्स क्वेश्चंस बाय R.U.C. राइस जूनियर, बार्नबी ऑन द फार्म बाय G. ऑटमैन, माई टाइम इन मार्स by I.B. Leavitt, Bottle Jam by C. Rushmore, Raging Winds by S.T. Orming। ये सभी बुक्स और ऑथर्स के नाम हैं। तो ज्वाइन दिस रीडिंग क्लब, इस रीडिंग क्लब को ज्वाइन करने के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट लीसा लिटिल। आप लीसा लिटिल से कॉन्टैक्ट करें। 129 यूनिवर्सिटी रोड, न्यू टाउन, 75540। अब यहाँ पे ये लीसा लिटिल का एड्रेस गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, क्रिएट योर ओन एडवर्टाइजमेंट सिमिलर टू द वन शोन अबव। जैसे ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट हमें ये दिया गया है तो नीचे जो एम्प्टी बॉक्स है वहाँ पे भी हमने खुद से एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है। इसको आप पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं या फिर किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन बी, टेक्स्ट बुक क्विज। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, विच कैरेक्टर्स आर बीइंग डिस्क्राइब्ड हियर। यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और हमने बताना है कि ये कौन से कैरेक्टर्स को यहाँ पे डिस्क्राइब किया जा रहा है। A है his heart was shaken with tears. B है he made a meal from a can with no label. C she gave someone a polished shield. D sentence है she was tied to a rock in the sea. E he gave money to a beggar. F she had always wanted a pet. यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में जिस कैरेक्टर को डिस्कस किया जा रहा है या डिस्क्राइब किया जा रहा है वो है द पोएट एवरीवन सैंग। बी है बहलोल, रॉबिन्सन क्रूसो। सी एथेना, पर्सियस एंड द गॉर्गन। डी एंड्रोमेडा, पर्सियस एंड द गॉर्गन। ई वैलेंटाइन हुए, अ फ्लैश ऑफ लाइट। एफ सारा, कराटे पैरेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, गिव कंप्लीट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस टेकन फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, इनको हमने आंसर करना है। ए है व्हाई डज अंकल शम्स लीव द मलिक्स हाउस। B. In what way does the lady misunderstood Bahlol? C. In the story of Perseus, what two things does Polydectes demand from Perseus? D. Question है, what reasons did Samir give for not wanting to keep a cat or dog as a pet? And last question is E. Make any 3 observations about the Braille alphabet. The answer of first question is Uncle Shams leaves the Malik's house because he overhears Mr. and Mrs. Malik talking about him and saying he is a walking disaster zone, a catastrophe waiting to happen, and a nightmare. They also say he eats like a horse and make other nasty comments about him. The answer of question B is Bahlol feeds the chicken with some food from the suspect can. When he reports that the chicken have died, he does not say how they have died, and the lady assumes they have died of food poisoning. The answer of question C is a horse and the head of Medusa. The answer of next question is Samir did not want one. He thought a flat was too small for a pet and it would be unfair to keep one there.
The answer of last question, question E, is Louis Braille perfected the system. It consists of raised dots on stiff paper. Each letter has its own marking. Common words have one symbol. Books in Braille are thick. The next section of exercise is section C, reference to context. Question number 1 है हमारे पास, answer the questions about these lines of poetry from your textbook. Textbook से हमें जो lines given है वो है I'm weak and pale, I've missed my rod, but there a cart came past. Question A है from which poem are these lines taken? B है who spoke the first line in this poem? C what are the misspelled words and what should they be? D how does the speaker come to be in this pitiful situation? And E what happens to the speaker in the end? First question का answer है these lines are from a misspelled tale by Elizabeth T. Corbett. 2 the little boy. 3 WEEK वीक की बजाय WEAK वीक. PAIL पेल की बजाय PALE पेल. इसी तरह से मिस्ड भी मिस्ड है, मिस्ड नहीं है. रोड RODE की बजाय ROAD रोड. एंड कार्ड इज CART कार्ड. नंबर 4 का आंसर है he went out on his sledge and lost his way in the rain and snow. लास्ट क्वेश्चन का आंसर है he and his sledge were safely towed back home. The next section is section D, working with words. Question number 1 है हमारे पास complete the following proverbs. हमें यहाँ पे proverbs given है लेकिन ये complete नहीं है, इनको हमने complete करना है. A है an eye for an dash. B actions speak louder dash. C don't pull all your eggs dash. Blanks के अंदर जो words आते हैं हमें उनको यहाँ पे लिखना है. फर्स्ट proverb को हम complete करें तो ये है an eye for an eye and a tooth for a tooth. B actions speak louder than words. And C is don't pull all your eggs into one basket. The next question is question number 2. Make adjectives from the following. हमें 4 words given है और इनको हमने adjectives में convert करना है. A envy, B wonder, C muscle and D shade. First word को जब हम adjective में change करेंगे तो ये हो जाएगा envious. Second wondrous और wonderful दोनों ही ठीक है. C muscular and D shady. The next question is question number 3. What do these abbreviations stand for? कुछ abbreviations हमें given है, 3 abbreviations हैं ये. VOL dot और capital में 3 words हैं PTO and last है UNO. First word is abbreviation of volume, second is please turn over and third is United Nations Organization. Our next question is question number 4. Give synonyms for these words. हमें कुछ words given हैं, 3 words हैं ये intolerable, trodden and vile. इनके हमने synonyms find करने हैं, यानी जिनका meaning almost इनके same ही हो. Synonyms का हम उर्दू में हम मायनी अल्फाज भी बोलते हैं. फर्स्ट वर्ड के लिए है unbearable और unacceptable, दोनों में कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं. सेकंड है stepped और walked, कदम रखना. और सी है foul, bad, evil या कोई भी बुराई, इसके लिए वाइल का वर्ड यूज़ किया जाता है. The next section is section E, learning about language, ज़बान के बारे में सीखना. Question number 1 है use ING participles to complete the following. First sentence को हम read कर लेते हैं. The dash boy was given a sweet. B a dash stone gathers no moss. C the children heard a very dash story. And D the girl was overjoyed dash her presents. जब हम इन blanks को fill करेंगे तो जितने भी वर्ड्स की हम हेल्प लेंगे उसमें हमने ING को भी ऐड करना है. फर्स्ट है विनिंग, सेकंड में है रोलिंग, थर्ड में एक्साइटिंग और लास्ट सेंटेंस में हम ओपनिंग का वर्ड यूज़ करेंगे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ ग्रुप. फॉर एग्जांपल द आर्मी ऑफ सोल्जर्स वॉक्ड टू द शिप. आर्मी ऑफ सोल्जर्स इज द कलेक्टिव नाउन, एक ऐसा नाउन जो कि पूरे ग्रुप को जाहिर करता हो. अंडरलाइन द कलेक्टिव नाउन्स इन ईच सेंटेंस. 3 सेंटेंस हमें गिवन है और हमने इसमें से कलेक्टिव नाउन्स को सेपरेट कर लेना है या अंडरलाइन करना है. ए है द फ्लॉक ऑफ गीज आर ड्रिंकिंग वाटर. बी द हर्ड ऑफ शीप इज ईटिंग ग्रास. एंड सी द पैक ऑफ वुल्व्स इज हाउलिंग. यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास फ्लॉक का वर्ड एक कलेक्टिव नाउन है, सेकंड में हर्ड एंड थर्ड में पैक. The last section of exercise is section F, composition. Take another look at the advertisement in question A on page number 62. पेज 62 पे हमने जो एक एडवर्टाइजमेंट देखा था इस एक्सरसाइज के बिल्कुल स्टार्ट में सेक्शन ए के अंदर. इमेजिन दैट यू सी दिस एडवर्टाइजमेंट. हमने इमेजिन करना है कि अपनी एक एडवर्टाइजमेंट इन अ मैगजीन, एक मैगजीन में देखा है. यू विश टू फाइंड आउट मोर अबाउट द रीडिंग क्लब, और आप रीडिंग क्लब के बारे में और जानना चाहते हैं बिफोर अप्लाइंग फॉर मेम्बरशिप.
इससे पहले कि आप इसकी मेंबरशिप हासिल करें या इसके रुकन बने। Write a letter to Lisa Little asking for information. Some questions to ask. आपने लीसा लिटल जिसका वहाँ पे एड्रेस दिया और कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ था, आपने उसको लेटर लिखना है और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं इस क्लब के बारे में। फर्स्ट है मेंबर्स के बारे में क्वेश्चन है। एज रेंज, उनकी एज रेंज क्या होगी, नंबर उनकी तादाद कितनी होगी, एंड लैंग्वेज लेवल क्या होगा उनका, बिगनर्स, एक्सपर्ट या इंटरमीडिएट। सेकंड है प्लेस, वेयर, कि ये क्लब है किस जगह। एंड थर्ड है टाइम एंड डेट्स, इसकी टाइमिंग क्या है, किस डेट में ये मुनक्किद होता है। इसके बाद है बुक्स, हुज चॉइस, बाय और बोरो, और जो बुक चूज़ की जाती है वो चॉइस किसकी होती है, उसको चूज़ कौन करता है, सेलेक्ट कौन करता है, अथॉरिटी किसके पास है, और बुक्स हमने बाय करनी है या हम बोरो कर सकते हैं। और लास्ट है कॉस्ट या फीस, इस मेंबरशिप की कोई फ़ी है या ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। End your letter with some comments about the quality of the advertisement itself. और लेटर के आखिर में आपने इस एडवर्टाइजमेंट की क्वालिटी के बारे में बात करनी है कि इसकी क्वालिटी कैसी लगी आपको, ये एडवर्टाइजमेंट कैसा था या इसमें कोई कमी बेशी थी तो आप उसके बारे में बता सकते हैं। इस लेटर का हेडर और फुटर सेम एक फॉर्मल लेटर की तरह होगा। इसकी जो बॉडी है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। हाय लीसा, आई सॉ योर एडवर्टाइजमेंट, आई हैव क्यूरीज अबाउट इट, आई वांट टू नो द क्राइटेरिया ऑफ एज लिमिट, नंबर ऑफ मेंबर्स एंड द लेवल ऑफ लैंग्वेज। Address of the reading club, date and timing is also not mentioned. Are there any charges to join this club? What is the process to choose a book? And who have the authority of selection of a specific book? Members or staff? We should buy a book or there is option of borrowing. Color schemes, font, paper quality, everything is good about your advertisement, but this necessary information is missing. Please inform about required details. Thanks. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.